Assalamu alaikum. Welcome to the class of financial accounting. Today we are going towards a new subject, corporate accounting. This is our new chapter, company accounting for issue of share. In this chapter we will learn how can we record accounting transactions when we are issuing shares, and what type of shares we will issue to the public. So this is all about this subject. Let's start the subject. This is our first slide. In this first slide we can easily learn that our topic is company accounts, and in company accounts we are learning about accounting for issue of share. So let's start. So this is our first slide. In first slide you can see the first word is capital. What's mean by capital? Capital is the amount on which on which owners are running the business. Who are the owners? The person who have provided capital to the company. So who have provided capital to the company? These are those persons who purchase shares. So what is share? What kind of words I am using in this chapter? Okay, let's start. कैपिटल, बेसिकली कैपिटल वो सरमाया होता है जिस पर हम बिजनेस कर रहे होते हैं. ये सरमाया हम लोगों से लेते हैं और उस पर हम पैसा कमाते हैं. और ये जो हम लोगों से लेते हैं उनको हम कैसे लेते हैं? उनको हम शेयर्स देते हैं और उनसे हम पैसे लेते हैं. तो वो हमारे शेयर होल्डर बन जाते हैं और जो पैसा वो हमें दे रहे होते हैं वो हमारा कैपिटल बन जाता है. तो जो शेयर्स होते हैं वो कैसे दिए जाते हैं? शेयर्स हम लोग ऑफ़र करते हैं पब्लिक को, फिर उसके बाद उनकी तरफ से एप्लीकेशंस आती हैं, फिर हम उनको अलॉट करते हैं एंड सो ऑन. दिस इज़ द होल प्रोसीजर जिसको हम अभी क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे. तो इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि कैपिटल वो सरमाया है जो हम शेयर्स इशू करके पब्लिक से लेते हैं और उसके बाद उस पर हम रेवेन्यू अर्न करते हैं. हमारे पास दो तरह की कंपनीज होती हैं. एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स जो है वो अपने डायरेक्टर्स और अपने इन्वेस्टर्स को पर्सनली सेल आउट करती है, जबकि हमारी पब्लिक कंपनी जो है वो पर्सनली सेल आउट नहीं करती, बल्कि वो ये शेयर्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर सेल करती है, जिससे के लिए वो अंडरराइटर की हेल्प भी लेती है. अंडरराइटर्स क्या होते हैं? अंडरराइटर की हेल्प कैसे ली जाती है? इस पर भी इंशाल्लाह हमारा भी नेक्स्ट चैप्टर आएगा इसी कोर्स में, तो उसमें हम थॉरली इस चीज़ को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. अभी हमारे लिए ये समझना ज़रूरी था कि कैपिटल क्या था, कैपिटल सरमाया था, शेयर्स क्या है. वो लोग जो हमें कैपिटल दे रहे होते हैं तो उनको जो सर्टिफिकेट्स हम लोग देते हैं उसको हम शेयर्स कहते हैं. वो एप्लीकेशंस भेजते हैं, उनकी एप्लीकेशंस को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इट्स मीन दे हैव सब्सक्राइब्ड. और हमारे पास दो तरह की कंपनीज होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक. प्राइवेट कंपनीज शेयर्स प्राइवेटली सेल करती है, जबकि पब्लिक कंपनीज जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में वो चीज़ को सेल आउट करती है. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नाउ there are different types of capital. We have already cleared that capital is used to earn revenue in last slide, and we know that capital is basically earned through issuing shares. Now we are want to know that share capital is a part of capital, means जो कैपिटल होता है उसका एक पार्ट होता है शेयर कैपिटल. नो व्हाट्स मीन बाय शेयर कैपिटल? हमारे पास अगर 50 लाख का कैपिटल है और हम सिर्फ 5 लाख के जो शेयर्स दे रहे हैं, तो ये 5 लाख जो है ये कैपिटल का एक पार्ट है जिसे शेयर कैपिटल कहा जाता है. तो इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम अपने कुछ काइंड्स को थॉरली स्टडी करते हैं, उसके बाद हमें ईजिली समझ आएगा कि इसे शेयर कैपिटल क्यों कहा जाता है. द फर्स्ट वन इज़ नॉमिनल एंड अथोराइज्ड कैपिटल. नॉमिनल एंड अथोराइज्ड कैपिटल इज़ अ कैपिटल. इट मीन्स द फेस वैल्यू ऑफ शेयर विच इज़ अथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम. मीन्स जितनी अमाउंट का कैपिटल कंपनी को अथॉरिटी होती है कि वो इशू कर सकती है. सपोज एक कंपनी के पास ये अथॉरिटी है कि वो 50 लाख का कैपिटल इशू कर सकती है. सो इट इज़ कॉल्ड एन अथोराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल. सो पार्ट ऑफ कैपिटल विच द कंपनी हैव अथॉरिटी टू इशू शेयर्स इज कॉल्ड एंड नॉन एज अथोराइज्ड एंड नॉमिनल कैपिटल. द नेक्स्ट वन इज issued capital. Now it is not necessary that company will issue whole capital simultaneously. The company have authority to issue 50 lakh as a capital to public, but per company will not issue 50 lakh simultaneously. Maybe company is need of only 5 lakh, so company will issue only 5 lakh 5 lakh rupees shares for rupees 5 lakh, and this 5 lakh is known as issued capital. Issued capital वो पार्ट है अथोराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल का
जितनी अमाउंट के लिए आपकी कंपनी जो है वो शेयर्स इशू कर रही है। कंपनी को भी 50 लाख की ज़रूरत नहीं है, कंपनी इशू कर सकती है, पर अभी कंपनी को 50 लाख की ज़रूरत नहीं है। तो कंपनी जितनी अमाउंट के लिए शेयर इशू कर रही है उसको हम कहते हैं इशूड कैपिटल। द नेक्स्ट वन इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वंस आई इशू 5 lakh एज अ कैश शेयर्स टू पब्लिक, द पब्लिक विल बाय ऑल द शेयर्स। मे बी public are willing to buy only 4 lakh. So that 4 lakh is subscribed capital. Subscribed capital is a part of issue capital which have been subscribed by the public, which the public are willing to buy. From 5 lakh only I have received applications for 4 lakh and public are willing to buy 4 lakh shares from my company. So that 4 lakh is the subscribed capital. Now it's not necessary that public have subscribe 4 lakh and I will call up 4 lakh simultaneously. Maybe I just need of only 3 lakh, so I make a call to my shareholders directors make a call to shareholders to pay 3 lakh to the company, so that company can use that cash or the capital for their business activities. So that part of subscribed capital for which directors make a call to shareholders is called as called up capital. हमने भी कहा था कि 5 लाख में से 4 लाख सब्सक्राइब कर लिए हैं। अब उस 4 लाख को भी मैं इकट्ठा नहीं मांगूंगी अपनी पब्लिक से। उस 4 लाख में भी मैं जो है वो देखूंगी कि मुझे अभी फ़िलहाल सिर्फ 3 लाख चाहिए, तो मैं उनको कॉल करती हूँ कि आप मुझे 3 लाख के शेयर्स के जो है वो पैसे दे दें। डायरेक्टर्स कॉल करते हैं कि आप हमें 3 लाख के जो पैसे हैं वो दे दें। तो जितनी अमाउंट के लिए डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को कॉल करते हैं उसे कॉल अप कैपिटल कहा जाता है। फिर उस कॉल अप कैपिटल को भी ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे पैसे आपके शेयर होल्डर्स दे दें। Maybe you make a call for 3 lakh, but public have submitted only 2 lakh. So the amount which actually paid by the public and which actually received by the company directors is known as paid up capital. Or paid up capital is a part of called up capital which is actually received or paid in cash by the shareholders. Now the next one is uncalled up capital. As I have cleared you in called up capital, that it's a part of subscribed capital for which directors make a call. Now you already know that directors make a call for 3 lakh only, but 1 lakh is still not is still left. There is no call made by the directors to shareholders. So that portion of subscribed capital for which directors have make no call is known as uncalled capital. अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कैपिटल के पोर्शन के लिए कॉल नहीं की उसको आप सारी उम्र ना करें। मतलब अब ये वो कैपिटल का पोर्शन जिसके लिए डायरेक्टर्स ने कॉल नहीं की, उसमें से कुछ पोर्शन आपकी कंपनी रिजर्व रख लेती है। जैसे 1 लाख है तो कंपनी सोचती है कि 50,000 के लिए तो कॉल करेंगे, लेकिन 50,000 के लिए किसी किस्म की कोई कॉल नहीं की जाएगी ताउम्र। ये जो 50,000 के लिए कोई कॉल नहीं की जाएगी इसको हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। द पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर विच नो कॉल बी मेड बाय द कंपनी, सो इट्स नोन एज रिजर्व कैपिटल। Now the next thing is what's mean by shares. Shares are the things which can shares are the certificates which are movable, and it's a movable property of the company, and it can easily be transferred from one person to another person. If you look at the definition, it's the certificate under the common seal of the company. Common seal उसकी stamp को कहा जाता है। is issued to the shareholders with their title specified therein, known as share capital. The title is specified on the share, and that certificate is known as the share capital. And what's mean by stock? Stock is the lump sum payment of the shares. Now if you look at the definition, this did not become much clear to us. सिर्फ इसकी डेफिनेशन से ये चीज़ हमें ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही। अगर हम सिर्फ डेफिनेशन को देखते हैं कि प्रॉपर्टी जो है इशूड शेयर्स जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और ट्रांसफरेबल है, और एक सर्टिफिकेट है जिसपे कंपनी की सील है, शेयर होल्डर्स को वो इशू किया गया है कंपनी के टाइटल के साथ, उसके अपने टाइटल के साथ, जबकि स्टॉक लमसम है, तो ये हमें क्लियर नहीं होता है। इसके लिए हम जानना चाहेंगे कि व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक. Now what's mean by shares what's difference between share and stock? So now what's shares difference between shares and stock?
शेयर इज़ प्रोवाइडेड टू शेयर होल्डर्स इन यूनिट्स। शेयर्स को यूनिट्स में इशू किया जाता है और ये डायरेक्टली इशू किए जाते हैं। सॉरी, नॉट डायरेक्टली इशू, इट इज़ डायरेक्टली इशू। ये डायरेक्टली इशू किए जाते हैं। डायरेक्टली मीन्स के ऑफ़र किए जाते हैं पब्लिक्स को, डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं, इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं, और ये फुली पेड नहीं होते। एज वी हैव डिस्कस्ड इन कैपिटल, मे बी सम पोर्शन ऑफ शेयर्स have been made a call from the director, some portion are still uncalled, so it is not a fully paid. Now this last one is numbered. इसके ऊपर नंबर्ड होते हैं 1 2 3 4 5, ताकि ये क्लियर हो कि कितने शेयर्स हैं आपकी कंपनी के पास, कितने शेयर्स आपकी कंपनी ने इशू किए हैं। तो शेयर्स जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये नंबर्स में होते हैं, सेकेंडली यूनिट्स में होते हैं, थर्डली ये डायरेक्टली इशू करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि फुली पेड हो। लेकिन स्टॉक जो होती है ये लमसम होती है। लमसम उसी वक्त जो है यानी ये यूनिट्स में नहीं होता। अगर मैंने 50,000 का करना है तो 50,000 लमसम में स्टॉक इशू करूँगी, और ये मैं डायरेक्टली इशू नहीं करती। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली इशू नहीं करती। दूसरा, ना ही मैं इसके ऊपर शेयर्स की तरह नंबर असाइन करती हूँ 1 2 3 4 5, बजाय इसके कि मैं नंबर असाइन करूँ, मैं इसको एज अ होल लमसम देती हूँ। एंड लास्ट वन इज़ कि ये फुली पेड होता है। फुली पेड यानी ये नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अगर मैंने 50 का इशू किया है तो मुझे 30,000 मिले हैं, 20,000 मिले हैं। जितने की भी हमने शेयर स्टॉक इशू किया होता है उसी वक्त हम वो सारी अमाउंट शेयर होल्डर से लमसम ले लेते हैं। नाउ इट्स क्लियर टू अस दैट व्हाट्स मीन बाय शेयर, व्हाट्स मीन बाय स्टॉक, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। देयर इज़ अ नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक काइंड्स ऑफ द शेयर. So now there are some kinds of shares. कौन सी kinds है? Under company acts there are basically two kinds of share: preference shares and equity shares. Preference shares are those shares which fulfill this basic two conditions. वो shares जो ये basic दो conditions को पूरा करते हैं उन्हें हम preference shares कहते हैं। कौन सी दो condition है? First one is द प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनको दो कंडीशंस पूरी करते हैं। यानी एक तो जब कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो सबसे पहले डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, उनका पहला राइट होता है डिविडेंड पे। दूसरा, जब आपकी कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तो जितने भी कंपनी की अर्निंग होती है उसमें से क्रेडिटर्स को और सेकंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पैसे दिए जाते हैं। यानी जब आपकी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनी को कभी लॉस होता है, कभी फ़ायदा होता है। हो सकता है कंपनी के पास फ़ायदा थोड़ा भी हो तो फिक्स रेट पर कंपनी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका फ़ायदा दे देती है, उसके बाद जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की बारी आती है। तो इस वजह से इसको हम प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। दूसरा, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तब भी अपने रेट के फिक्स रेट के मुताबिक ये अपना हिस्सा ले लेते हैं, उसके बाद इनका कोई हक नहीं होता। उसके बाद जितना कुछ रह जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट होता है। सो इक्विटी शेयर होल्डर हैव नो प्रेफरेंस ऑन डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किसी किस्म की कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती। यानी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना हिस्सा ले लेते हैं, उसके बाद जो कुछ बच जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है। सेकेंडली, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है आर रिस्क टेकर, वो रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि अगर कंपनी को फ़ायदा होगा तो वो फ़ायदा तो लेंगे, लेकिन अगर कंपनी को नुकसान होता है तो उस नुकसान में भी पार्टिसिपेट करेंगे। जितने हद तक उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं उस हद तक वो जो है वो क्या करेंगे, नुकसान भी लेंगे। इसी तरह क्योंकि वो नुकसान ले रहे हैं तो वो रिटर्न भी उनका ज़्यादा होगा। यानी अगर कंपनी ज़्यादा अर्न कर लेती है, कंपनी 50 लाख अर्न कर रही है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने फिक्स रेट के हिसाब से अपना फ़ायदा ले लेंगे। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स जिसको ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स भी कहा जाता है, वो जो पैसे लेंगे, जब कंपनी का अर्निंग ज़्यादा है तो उनके डिविडेंड भी ज़्यादा होगा, और अगर कंपनी की अर्निंग कम होगी तो उनका डिविडेंड भी कम होगा। सो दे आर द बेसिकली रिस्क टेकर एंड हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, एंड दे हैव आल्सो रिसीव सरप्लस ऑन वाइंड अप। जब कंपनी वाइंड अप हो रही थी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने सबसे पहले अपना हिस्सा तो ले लिया, लेकिन बाकी जो बचा, अगर उसमें कुछ ज़्यादा बच गया, ज़्यादा सरप्लस आ गया, तो उसमें भी किसका हक होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। सो थ्रू दिस टू डेफिनेशंस वी कम टू नो दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ऑनर ऑफ द बिजनेस। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के असल ऑनर्स हैं। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद अब तो हमें थोड़ी सी ज़रूरत है कि हम ये देखें कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कुछ काइंड्स हैं, वो कौन सी काइंड्स हैं। सो नाउ what's basic kinds of preference share? First one is cumulative and non-cumulative.
I do not like to directly go towards the definition. I would like to have a first of all example. Now look at the example. If the company have a profit on first year is nil, the company did not earn any type of profit, so obviously a company is not in a condition to provide dividend, so dividend is nil. In the next year the company have earned something. Now the company have to provide the dividend of second year plus first year, 2000 for the second year, 2000 for the first year. The company have to provide a total dividend of 4000. This is called cumulative dividend, cumulative preference share. And cumulative preference shares, the shareholders have the right to receive their fixed rate of dividend at any cost. Either company is earning profit, or either company is going towards the loss. It's the liability of the company to pay dividend to the cumulative preference shareholders. Now what's in non-cumulative shares and non-cumulative? In the first year the company have no profit and company have not provided any type of dividend to preference shareholders. In the second year the company have earned something. Now the company is liable to provide dividend for that specific year only. The company is not responsible to provide dividend for the last year. This is called non-cumulative preference shareholders. If I look at the definition, in case of cumulative preference shares, if the profit of the company in any year are not sufficient to pay dividend on such shares, the deficiency accumulate to be paid out of the profit of the subsequent years. Now the definition of non-cumulative preference shares. Non-cumulative preference shares dividend is only payable out of the net profit of each year, and the share do not have the privilege of accumulation of the unpaid dividend. So it should be noted that preference shares are not described in the article as being of either kind. In article neither kind is defined, but there are basically two kinds. First kind is cumulative and non-cumulative. The second one is redeemable and non-redeemable. Redeemable means capital will be refunded on redeemable preference shares after some specific time. After some specific time, preference shares will get expired, and either will be expired or converted into equity shares, and the amount is repayable to the shareholders. While in non-redeemable shares, they are not redeemable. Not the whole capital will be refunded to the preference shareholder. If I look at the definition, redeemable preference shares are those the capital of which may be refunded by the company after some specific time. But in non-redeemable preference shares, the capital of which will not be refunded before wind up. The capital will not be refunded to the company till wind up, in case of non-redeemable share. But in case of redeemable share, the capital will be refunded to the shareholder after some specific time, the time duration which have been decided by the company may redeem. सो रिडीमेबल शेयर वो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिस पे कंपनी कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद पैसे उनको वापस कर देती है, जबकि नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती, कंपनी इसके पैसे शेयर होल्डर्स को वापस नहीं करती। नाउ द लास्ट वन कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं तो जो अपनी एक फिक्स रेट पर डिविडेंड तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट होता है, जो हमने कहा था कि इक्विटी शेयर उसका हक है कि वो लें, तो ये जो आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये वो शेयर होते हैं कि इनका भी हक होता है कि ये सरप्लस में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ये सरप्लस ले सकते हैं। तो ये जो सरप्लस ले सकते हैं, इसी वजह से इनको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। इवन कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, तब भी अगर कंपनी के पास किसी किस्म का कुछ सरप्लस एसेट्स है, सरप्लस पैसा है, तो उस पर भी ये पार्टिसिपेटिंग शेयर्स जो है, प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज वाज अबाउट द participating and non-participating preference shareholder, participating preference shareholders or participating preference shares are those shares which are participate in surplus, either surplus in at the wind up of company or surplus at the time of distribution of dividend. While non-participating shareholders have no right on this surplus. Now we have already thoroughly discussed these basic kinds of share. Now we are in need to have a glance on some basic features of preference and ordinary shares. Now we have some we will have a glance on
Basic features of issue of shares. Already we have discussed it in detail. They have a preferred right on dividend at fixed rate. Dividend पे सबसे पहले इनका हक होता है fixed rate पे. Preference right on wind up के टाइप भी पहला जो है वो right होता है preference shareholder का. Redeemable after specified date. इसमें कुछ types of preference shares ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के बाद जो है वो रिडीमेबल होते हैं. रिडीमेबल का मतलब है कि उनके पैसे उनको वापस कर दिए जाते हैं. तो इसमें जो है कुछ टाइप ऑफ कह रहे हैं, कुछ ही नहीं, ये रिडीमेबल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. सो नेक्स्ट इज नो वोटिंग राइट बिकॉज दे आर नॉट द रियल ऑनर ऑफ द बिजनेस, सो दे हैव नो वोटिंग राइट्स. वो कंपनी के किसी किस्म के डिसीजंस में वोट नहीं दे सकते, कंपनी के फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. may or may not convertible into equity share. These shares may be or may not be convertible into equity shares. ये equity share में convert भी हो सकते हैं और convert भी नहीं हो सकते, depend on the policy of the company. Now have a glance on features of equity shares. Now we will move towards equity shares. Equity share are the part of capital. Already we have discussed it in detail. They are bought and sold in stock exchange. We have discussed they are convertible, transferable. They have a voting right. They will participate in the management of the company. They will take part in basic decisions of the business. They will participate in profit, in surplus profit, in normal surplus profit of the business, and in surplus profit at the wind up of the business. So the same feature which we have already discussed is now again we are discussing कि कैपिटल का पार्ट होता है, स्टॉक एक्सचेंज में इसको ख़रीदा बेचा जाता है, इनका कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, इनको वोटिंग का फुल राइट होता है, ये वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेस के डिसीजंस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी वोट देते हैं कि ये डिसीजन होगा या नहीं होगा. कंपनी के प्रॉफिट में इनका राइट होता है, सरप्लस प्रॉफिट में, सरप्लस एसेट्स में वाइंड अप के तौर पर, बिकॉज दे आर द रियल ऑनर ऑफ द बिजनेस. सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस थ्योरी, इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरी है उसका ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास, cumulative convertible preference shares. These shares are allowed by the government on 19 August 1985 on some following guidelines. The government allowed that a company can issue this type of share only when they are setting up a new projects. So the company when setting up a new projects, they are in need of money, so government allow to issue such type of shares. Or when the company expanding existing projects, or the company is company want to expand the project on which the company already involved, in such a situation the company allow to issue such type of shares. And also when company want to do capital expenditure for the purpose of modernization. Modernization means company wants to use new techniques, technologies, and they are in need of money. In such situation government allow them to issue such type of shares. And also if the company working capital requirement is high and company have not enough capital and they are in need of finance, so the company can issue such type of shares. Secondly, government allow to issue such type of shares only up to the limit. What's mean by the limit? जिस हद तक अपनी इक्विटी शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब कर सकती है. जैसे हमने लास्ट इक्विटी डेफिनेशन में कहा था कि कंपनी जो है वो 50 लाख तक इशू कर सकती है, और सपोज़ कंपनी ने ऑलरेडी 25 लाख इशू किया हुआ है, तो कंपनी अगर 5 लाख मजीद या इक्विटी शेयर इशू करे या फिर क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करे, तो कंपनी के पास राइट है कि वो इशू कर सकती है अप टू दैट लिमिट, यानी कंपनी उस लिमिट से ज़्यादा आगे नहीं जाएगी. सब्सक्राइब्ड यानी convertible into equity, this shares can easily be convertible, so this share will be convertible into equity share after 3 to 5 years. This is the limit time. इस लिमिट टाइम के अंदर इस शेयर्स को जो है कन्वर्ट होना होगा इक्विटी शेयर्स में, और इस पर जो डिविडेंड दिया जाएगा जब तक ये कम्युलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है उस वक्त तक जो डिविडेंड दिया जाएगा वो 10% होगा, और उसके बाद जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो नॉर्मल जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है उसी तरह से इनको भी डिविडेंड दिया जाएगा. ये जो कन्वर्जन जो ही हो जाएगा ये शेयर जब कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डिनरी शेयर में, तो उसी वक्त इसके तमाम राइट्स, इसके तमाम जो फीचर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे.
इक्विटी शेयर में, जस्ट लाइक प्रेफरेंस शेयर्स इज कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर। और 5 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम लिमिट है। 5 ईयर्स के बाद ये शेयर्स हम लोग रन नहीं कर सकते। 5 साल के बाद लाजमी कंपनी ने इस शेयर्स को कन्वर्ट करना होगा ऑर्डिनरी शेयर्स में। And then lastly, the company can issue shares after fulfilling all the requirements which are described in the company's ordinance, issuing prospectus or all the requirements by SEBI, Security Exchange Commission of Pakistan, or in this book Security Exchange Budget of India, Asset Book of India. So after fulfilling all these requirements, company can issue share to the public, which we have already discussed the types of shares and other things. Thank you for watching this video, and have a queries you can ask in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.